हाय देयर, मेरा नाम फ़ाखिर है और मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ। और इस लेसन में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे बेसिकली जहाँ से हमने पिछली दफ़ा छोड़ा था। हमने ये एक्सरसाइज की थी, इसमें हम लिस्ट ऐड करें। वी सॉ के you can basically create a new list using the plus operator. So this is going to combine two lists and create a new one, and then it's going to return that. और फिर हमने देखा था कि how append function works, and then you can append multiple lists inside lists. So यहाँ से हम आगे की तरफ मूव करेंगे और the big idea is that कुछ functions, there are some functions that can actually mutate the list, यानी कि they change the contents or in some way the same list object, and they don't return anything. So for example, ये return function अभी हमने देखा, this append one, this does not return anything. अगर यहाँ पे आप करेंगे भी l equals to l1 dot append, it's going to just return none. So ऐसे functions जो कि अपने parameter में list लेते हैं and then they don't return anything but they also change or mutate the list in some way, these are called the functions with side effects. So इसको side effect कहते हैं. So consider this operation on a list, and this is append, which we have already seen. So हमारे पास एक list है 2 1 3. Now if we want to add a new item, append is going to basically add an item at the end of the list. Basically इसकी tail के ऊपर ये जाके एक नया item को insert कर देगा. इस केस में the new list is going to be 2 1 3 5. So जो append function है वो उसने इस लिस्ट को म्यूटेट किया है और इट डिडंट रिटर्न एनीथिंग, और आपकी जो लिस्ट है वो चेंज हो गई है और द एंड रिजल्ट इज कि इसके अंदर एक नया आइटम ऐड हो गया एट द एंड ऑफ द लिस्ट. सो ये डॉट ऑपरेटर के बारे में तफसील से देख चुके हैं, सिंस आपको पता है कि पाइथन के अंदर हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इफ़ यू वांट टू एक्सेस द बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स वी कैन यूज दिस डॉट नोटेशन हियर. इसके बारे में हम तफसील से आगे जाके देखेंगे. So okay, now what I want you to do is you need to create this function. So what this function is doing, it's accepting this parameter, which is an integer, as a parameter, or it's returning a list that contains numbers from 1 till n inclusive. So for example, अगर आप यहाँ पे देते हैं 5, so this function is supposed to return a list that contains 0 1 2 3 4 and including 5. How do you do that? Before I move to the next slide and show you the solution, what I want you guys to do is just pause the video and think about it and then come back. So moving forward in 3 2 1. So that's the solution. Essentially what you're doing here is you're creating a new list, which is an empty list, and then from obviously क्योंकि अगर आपने n को include करना तो you have to go from range 0 to n plus 1, और फिर आप क्या कर रहे हैं, you're just appending these numbers one by one in the list, or once you're done you return l essentially, or when you call this function it's going to return the list, or when you try to print l it's going to print 0 1 2 3 4 5. So that's the basic idea, is that you create a new list inside the function and then you return that list. अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि why wasn't this list destroyed when this function frame was destroyed? तो इसका आंसर है कि before you destroy the frame, the list was returned and saved successfully in this parameter, in this variable, which is a global variable in this case. So that's how the list survived. There's another a short way to generate exactly the same list, or this is a shortcut. Basically range n to 1 n plus 1 आपको पता है कि this is going to create an iterator for I in range 100 for example. So that creates an iterator of values, and then you convert that iterator into a list using this list function. So list function जो है इसके अंदर कोई भी आप iterable देंगे, it's going to convert into a list, and then it's going to give you a list at the end of numbers. So this is just one liner as opposed to the previous loop. So here's another one. Write a function that meets these specifications
First of all, you have two parameters. One is the length, not the length, the list L, and the other one is element which you want to remove from the list. So basically L list है, इसके अंदर काफ़ी सारे elements हैं. उस लिस्ट में से आपने सारे के सारे ईज को रिमूव करना है. ई से मुराद जो गिवन कैरेक्टर हैं वो अपने सारे के सारे रिमूव करने हैं. इट कैन बी कैरेक्टर, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी एलिमेंट, एनी जेनेरिक ऑब्जेक्ट. सो एंड इट रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट. दैट्स अ की हियर. दिस न्यू लिस्ट, उसने पुरानी लिस्ट को म्यूटेट नहीं करना, चेंज नहीं करना, बल्कि एक नई लिस्ट रिटर्न करनी है. सो अगर आप इस ऑपरेशन के बाद L को प्रिंट करेंगे तो L शुड एग्जैक्टली बी द सेम. इट शुड नॉट चेंज, बल्कि इट remove element should return a new list which has all the elements except for the one that we just removed. So pause this video here and think about it. Try to do this function. Think about कि हम इसको किस तरह से skip कर सकते हैं, and then come back. So we'll proceed to the next solution in 3, 2, 1. So here's the idea. The idea is कि आप एक नई लिस्ट बनाएंगे एंड पुरानी लिस्ट में आप देखते जाएंगे आइटम्स को. अगर आइटम हमारे टारगेट कैरेक्टर के इक्वल नहीं है तो हम उस आइटम को नई लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे. सो दैट्स हाउ वी स्किप. बेसिकली हम नई लिस्ट में आइटम्स को अपेंड कर रहे हैं और जो आइटम हमारे टारगेट आइटम की इक्वल है उसको हम सिंपली इग्नोर कर देते हैं. And once we've done, we return the new list. So end pay, the list is going to contain only those items which we skipped, we didn't add in the list. So that's the basic idea. That was the solution. Actually मेरा सर आगे आ गया था, so I apologize. Can you convert a string to a list? Yes, you can do that using a list function, or every character in this string is going to be an item in the list. Split, actually अगर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ये. So let me just quickly resize. Yeah. So basically अगर let's say आपके पास you have a string s equals to fcc, and if you want to convert this into a list, then it's going to basically break it down character by character and हर एक character को list के एक item के तौर पे वो store कर देगा. So that's how it converts the list. और जो पिछली वाली example है उसमें अगर आप range iterable को convert करना चाहें list में, this is exactly how it's going to do it. All right. Now you can use split to split a string. So बजाय कि आप हर कैरेक्टर को तोड़ें, आप एक खास कैरेक्टर के ऊपर भी तोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोमा सेपरेटेड स्ट्रिंग है, उसको आप तोड़ सकते हैं. स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, आप उसको तोड़ सकते हैं वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस. एंड यू कैन स्पेसिफाई एनी कैरेक्टर और एनी सब स्ट्रिंग हेयर जिसके ऊपर आपने इसको तोड़ना है, ब्रेक करना है. दिस इज एन एग्जाम्पल. It says a string that says hello world from Python, and this is a bunch of words in a sentence. This is space separated, and when you do split without any parameters here, इसका मतलब है कि space is going to be considered as default, और वो space के ऊपर break करेगा. So when you do this, it's going to break it into multiple strings first. That's step number 1, and then it's going to put all of these strings in a list in order. Order matter karta hai, obviously, and then that's what it's going to look like at the end. And then it's going to bind the word, the name called words, to this list. So again, just to recap, s.split, that's going to split this sentence into multiple words क्योंकि हमने कोई parameter नहीं दिया. It's going to consider space, and then it's going to create a new list. Remember that's important. एक नई list बना के then it's going to bind the word, this word called words, to that. So that's a variable name. So that's how the split works.
And how do you convert the string back to list of strings back to a string? So अगर आपके पास again you have a list of strings, अगर आपने उनको सारा combine compress करके एक string बनानी है तो you can use join. इसका syntax थोड़ा सा weird है. इसमें you are giving an empty any string. This can be empty, this can have other character. हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है. But to summarize, you have a string, then you do dot, and then you do join L. So join is the function which you use to connect all of the words. और जो connector है इन सब words के बीच में, that is going to be this string. अगर आप empty छोड़ेंगे तो सारे के सारे words वो बगैर किसी gap के या space के आपस में connect हो जाएंगे. इसके में example देखते हैं. So this is a list of strings. Hello from Python. When you do result equals to, this is a space character, dot join L. What it's going to do is it's going to pack or connect or combine all of the words together. But हर word के बीच में एक space डाल देगा because you're mentioning space here. अगर आप ये खाली छोड़ देंगे empty string, तो it's going to just put an empty character there. So for example, this is how it's going to look like. जो भी कैरेक्टर आप यहाँ पे देंगे या जो भी सब स्ट्रिंग आप यहाँ पे देंगे वो हर वर्ड के बीच में से जाके उसको इंसर्ट कर देगा. So at the end, your string is going to look like this, and that's converted from the list. So that's a single list of character, all of the words that were in the list. So now you try this. You have to write a function which takes a sentence, and sentence is a string. Basically, that represents any sentence in English. So you need to count the number of words in that sentence. So आपको पता है कि जो English के अंदर sentences होते हैं उसके अंदर हर word जो है that is space separated. We are ignoring commas for now in this case. How do you do that? How do you count words in a sentence? So again, the basic idea is that you somehow break that sentence into words, and then you count those words, and then you return the answer. Before we move to the solution, think about it and pause this video. We go to the next slide in 3, 2, 1. So that's the solution essentially. इसमें आपने करना है, आपने simply string को spaces के ऊपर break करना है. It's going to create a list which is going to be returned in the words variable. And then all you have to do is just count the length of that string. कितने items of string उस list में हैं, and that's your answer. So in this case, it's going to split it by spaces. So it's going to create 3 words, 3 items in the list, and then the length of that is 3. And that's your answer. A major operations on list, अगर आपने for example कोई item list में add करना है at the end of the list, then you use the append and it mutates the list. Other operations or functions that mutate the list, they are sort, for example. So अगर आप sort करेंगे L dot sort, then it's going to mutate the list, meaning कि it's going to change the structure of the list. जितने भी items हैं उसको या तो ascending या descending वो sort करेगा. By default it's ascending. Reverse में it does the exact opposite. It reverses the string. जो भी string का order है, it doesn't sort, but it reverses. उसको उल्टा कर देता बिल्कुल. It's like doing colon -1. And then it mutates the list, but colon -1 is not going to mutate the list. It's just going to create a new list, and then it's going to return that. Slicing में ऐसे होता है. हम आगे जाके देखेंगे. Sorted is another function which in this case is going to create a new version of sorted L. It's not going to mutate. That's a very important key difference between sort and sorted. So which one should you use? That exactly depends on what you're trying to do. अगर आप चाहते हैं कि आपका L in place sort हो जाए, यानी कि mutate हो जाए, आपको extra copy ना बनानी पड़े string की या list की, तो then you sort. Otherwise आप चाहते हैं कि मैं original list को change नहीं करना, बल्कि इसकी एक sorted copy मुझे मिल जाए, then you use this sorted function. उनको इन्वोक करने का तरीका भी थोड़ा सा फर्क है अगर आप देखें इसमें. Alright, another example. So in this case, you have a sort words function which takes a string sentence. So आपने करना है एक English sentence आपको दिया हुआ है जिसके अंदर काफी सारे words हैं. आपने उन words को sort करना है और आपने
उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करके फिर वो लिस्ट रिटर्न कर देनी है। वैसे आप इसमें आप एक नया सेंटेंस बना के भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन लेट्स रिटर्न अ लिस्ट, इट सेज द न्यू लिस्ट। सो pause this video, try to think about it, and we move to the solution in 3, 2, 1. So that's a pretty simple solution. All you have to do is just split the sentence, and then you have to call sorted on this list. And why sorted? Why not sort? Because उसने कहा है कि you need to create a new list, और हमने देखा था कि sorted is going to create a new list, sort is going to just mutate the existing list. And so that's going to sort, break this down into words, and then it's going to sort these words into order, and then it's going to return the list. A big idea. Functions with side effects mutate inputs. इसका मतलब है कि अगर आप कोई लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास करेंगे किसी फंक्शन में, और फंक्शन वो म्यूटेट करता होगा लिस्ट को, तो आपका जो पैरामीटर है दैट्स आल्सो गोइंग टू चेंज, बिकॉज इट्स द सेम थिंग दैट्स इट्स म्यूटेटिंग। जो फंक्शंस हैं वो कैसे पास होते हैं लिस्ट में? दे आर पास्ड बाय रेफरेंस। इसका मतलब है कि जब आपने एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाया, सो फॉर एग्जांपल दिस इज योर ऑब्जेक्ट हियर, this is going to be in the memory, and this same object will be bound to this parameter called LST, and when you change LST object, it's actually changing the list. और आप देख रहे हैं कि when you double all of the numbers inside the list, और बाहर जाके when you print numbers, even though कि आपने कहीं पे इसको साइन या रीसाइन नहीं किया, ना ही इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया, so you see that this is going to contain 2, 4, and 6. Why? Because again, this object was being passed in as a parameter, and the same object was bound to the name LST. So basically अब इस ऑब्जेक्ट को दो नाम पॉइंट कर रहे हैं, एक तो नंबर्स है और एक LST है। और जब LST चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, तो then it's going to change the original object. So again, just to see it visually, this is the object, and then when we call the function, it's going to point to the same object in the memory, and then it's going to change that, mutate that, and then at the end आपका जो original numbers था, object था, that's going to change. Right, here's a quick question. So इमेजिन दैट आपको एक लिस्ट दी हुई है, और आपने क्या करना है, आपने उस लिस्ट में जितने नंबर्स हैं उन सबको स्क्वायर करना है, एंड दैट्स इट। बेसिकली स्क्वायर करने से ओरिजिनल लिस्ट जो आप पैरामीटर से पास करेंगे वो चेंज होगी, वो म्यूटेट होगी। दिस फंक्शन इज गोइंग टू म्यूटेट द लिस्ट, इट्स अ म्यूटेटर, इट्स नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। सो जब आप के पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, 4, एंड व्हेन यू स्क्वायर इट यूजिंग this function, you pass this as a parameter. So this thing will be passed as a parameter, you square it, and then we print the original list called L, then it's going to print 1, 4, 9, 6, and so on. How do you do that? Again, think about it, it's not very difficult, it's pretty simple. Pause the video, and let's meet in the next slide in 3, 2, 1. Here's the solution, and it's pretty simple. Exactly, आप जब लिस्ट पास कर रहे हैं, that this list is going to be the exact same thing जो कि आपने पैरामीटर से पास किए, they both point to the same object in the memory. When you mutate one, you mutate all of the aliases, the names जो कि इस object को point कर रहे हैं. And when you go outside, the original list is mutated, it's changed, and then it's going to print 1, 2, 3, 4, 5. So let's take a look at a tricky example when you try to iterate over indices of L, which is especially going to mutate L each time. Either it adds more elements or it removes items from it. So जो range है basically that हमने देखा था classes में कि that returns an iterator which behaves like a tuple essentially. So range 5 is going to return a tuple of 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4.
So this is what range 4 returns, and this is what range 2, 9 and 2 returns. This is not exactly identical to a tuple, it's an iterable, but you can think of it as a tuple. Right, so let's dive into our first tricky example, and that is, let's see, we have a list called 1 2 3 4, और अब हम क्या कर रहे हैं, for I in range length of L, okay, L dot append I and then print L. इसमें अब गौर से देखें तो हम लिस्ट को चेंज कर रहे हैं हर आइटरेशन में. अब जब लिस्ट चेंज हो रही है तो लेंथ ऑफ L भी थ्योरेटिकली चेंज होनी चाहिए. सो पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट कि ये कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा है और क्या आउटपुट आपको देगा एट द एंड. सो डू इट एंड सी यू इन 3 2 1. All right, so basically what's going to happen is this length, जब आपका कोड बिल्कुल पहली आइटरेशन में आएगा, ये लेंथ ऑफ L ये पहली दफा कंप्यूट होगी, और पहली दफा में इसका जो साइज है दैट इज गोइंग टू बी 4. अब जो रेंज है दैट इज गोइंग टू जनरेट a tuple of a tuple of 4 items, 0 1 2 3 4, 0 1 2 and 3, 4 items. और ये एक पहली दफ़ा में उसने जनरेट कर दिया. अब जो भी आपका I है विच इज़ दिस लूप वेरिएबल, वो इस टपल में से ही आएगा. सो नाउ व्हेन यू ट्राई टू रन दिस कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल द I इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस आइटरेटर, द फर्स्ट वैल्यू इज 0, इवन दो कि आप देख रहे हो कि L जो है दैट इज बीइंग अपेंडेड, सो उसकी जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है. लेकिन ये जो लेंथ थी वो पहली दफ़ा में कंप्यूट हुई थी जब पहली दफ़ा चला था. और आपका आइटरेबल लूप के पहली दफ़ा जब आप चलाते हो तो लूप जब चलता है तो उसमें पहली दफ़ा कंप्यूट होता है. फिर इट्स गोइंग टू बी 2, इट्स गोइंग टू बी 3, इट्स गोइंग टू बी 3 के बाद देयर इज नथिंग, सो द लूप इज गोइंग टू टर्मिनेट. और जो आपके L है उसका साइज इवन दो कि इट्स अ लॉट बिगर नाउ, बट द लूप इज स्टिल गोइंग टू रन 4 टाइम्स. सो जब भी आप L को म्यूटेट कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टपल. सो दैट्स द इंपॉर्टेंट key takeaway from here. Right. So it is another tricky example. You have L equals to again the same list and I equals to 0. And then this time you don't have the range. You have E in L. And E is coming from this list. And then L dot append I and then I plus equals to 1 and then print L. So now इस केस में अब क्या होगा? What do you think this code is going to do? Can you predict the output? So I want you guys to pause the video, think about it, and see you in 3 2 1. So essentially इस केस में there is no iterable here. जो आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो लिस्ट से आ रही हैं, और हम लिस्ट को हर आइटरेशन में म्यूटेट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी लिस्ट हर आइटरेशन में चेंज होती जा रही है. अब आप एक आइटम लिस्ट में डाल रहे हैं और आपका E भी उसी लिस्ट में आ रहा है, तो देन इट मीन्स कि इट्स नेवर गोइंग टू स्टॉप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल E इज गोइंग टू बी 1 एंड देन यू अपेंड I इन इट, यू गेट 0, एक साइज बढ़ गया. फिर आप E जब इसके अंदर 2 होगा, क्योंकि आप अगला आइटम उठाएंगे, तो फिर उसमें आपने एक नई चीज़ अपेंड कर दी. सो E जैसे जैसे आगे जाता जा रहे हैं वैसे वैसे आप नंबर्स भी अंदर अपेंड करते जा रहे हैं. सो दिस इज नेवर गोइंग टू स्टॉप. It's an infinite case essentially. It never stops. So you need to understand the difference between for I in range length of L or for E in L. So दोनों बहुत major difference हो सकते हैं अगर when you're trying to mutate the list. अगली tricky example करने से पहले we need to recall that there is something called a plus operator for strings. What that does is that creates a new list out of the previous ones. It does not mutate. So let's suppose आपके पास दो lists हैं. When you try to apply a plus operator on the two lists, it's going to create an entirely different new string, new list from L1 and L2. So this is going to play an important part in our next tricky example.
So there is another thing that's called extend. Plus, it adds lists, but it does not mutate. आप वो याद करें एग्जाम्पल सॉर्ट और सॉर्टेड वाली. Extend is going to combine two strings and it is going to mutate the list. So for example, अगर आपने L1 plus L2 किया तो this is going to create a new list जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है. और अगर आपने कहा L1 dot extend L2, it's going to create इसकी आउटपुट जो होगी that's going to be exactly the same contents, लेकिन it's going to just change L1. इस केस में अगर if you extend L1 06, then it's going to add 06 to L1 basically, changing L1. It's not going to create a new list. अगर आप करेंगे L1 plus 06, then it's going to create a new list and L1 will be unchanged. So that's a different example. यहाँ पे you're adding to a list which contains two sublists as items in L2. So it's going to create add two new items in the list basically. Yeah, and now we are ready to tackle this tricky example. अब आप ये example देखें. इसके अंदर we have L equals to 1 2 3 4 and E equals for E in L equals L plus L and print L. अब हमने सबसे पहले ट्रिकी एग्जांपल में देखा नंबर 1 में कि हमारा लूप जो है 4 टाइम्स चला था बिकॉज इट वाज यूजिंग रेंज. दूसरी ट्रिकी एग्जांपल में हमारा लूप चला था infinite times because we were using E in L or we were mutating L. इस केस में कैन यू गेस द आउटपुट कि आउटपुट क्या रही है. अब यहाँ पे L जो है आपकी डबल हो रही है. व्हाट्स द आउटपुट गोइंग टू बी. क्या ये फाइनाइट टाइम्स चलेगा या इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा. टेक अ गेस, थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड सी यू in 3 seconds. 1 3 2 1. Alright, so this is basically a little bit different. Why? Because यहाँ पे आप L को exactly ये जो L आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस L का जो ऑब्जेक्ट है इसको म्यूटेट आप नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जो आपका फॉर लूप के अंदर E's हैं, they are coming from this L. This is the object. The first time E is going to come from here in this L and then L is equal to L plus L. आपने दोनों लिस्ट को कंबाइन किया which is going to create a new list और वो आपने उसको लेबल कर दिया L equals to that new list which contains these items. लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट था जहाँ से E's हमारे आ रहे थे वो तो अभी मेमोरी में पड़ा हुआ है और E's को पॉइंट कर रहा है और आपके E's जो हैं वो अब यहीं से ही आएंगे, आप चाहे इस ओरिजिनल L को जितना मर्जी चेंज करें, क्योंकि आपने यहाँ से पॉइंटर हटा के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर दिया. So now the second time it's going to be the double of previous one. Again L is changed, but E जहाँ से ये ऑब्जेक्ट मेमोरी से ले रहा है चीज़ें, that is going to be the same one which was initially created. और अब उस ऑब्जेक्ट को L पॉइंट नहीं कर रहा, सिर्फ E पॉइंट कर रहा है. And then this is the third time, and then this is going to be the fourth time. So this loop runs exactly 4 times. This is not infinite times. So that's a major distinction. हाँ, अगर आप यहाँ पे म्यूटेट कर रहे हो, म्यूटेट का मतलब डॉट एक्सटेंड कर रहे हो L, तो then this is going to change और फिर this would become an infinite loop. In this case, you're not mutating, you're just creating a new list and returning. That's why it's not. So this is not an infinite loop. Sorry, मेरा सर बीच में बार-बार आ जाता है. I hope कि आपने ज़्यादा मिस नहीं किया होगा इसमें. It is just doubling the list जो कि आपको नजर आ रही है on the right side. So basically, what you can do is you can also delete all of the items in a list, which means it'll mutate the current object and it's not going to create a new list. So for example, let me clear this. Let's say you have a list L equals to anything like 1 2 3, and then जब हम L के contents देखें it's 1 2 3, हम L की ID देखें
तो L की ID जो है that is this in the memory, right? इसको अपने गौर से अब देखना है. अब हम करेंगे L dot clear, so it's going to remove all of the items from this list. मीनिंग कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्लियर किया था मेमोरी में, उस एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्ट को म्यूटेट करके सारे ऑब्जेक्ट उसने रिमूव किए हैं. अगर हम इसकी आईडी दोबारा गौर से देखें तो इट्स एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस वन, दिस वन. अब आप देखें L equals to an empty list. Now we are creating a new empty list. अब आप देखिएगा इसकी आईडी, so that's completely different. So clear has cleared the current object, and when you try to create a new list from this syntax of empty brackets, then it's going to create a new object in the memory and then it's going to return that. So दोनों में फर्क है. The clear function is going to mutate the list. So for example, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि you have a list called 1 2 3 और उसकी ID आपको यहाँ पे नजर आ रही है, which is 1 2 3 4 5. When you do L.append, it's going to add an item in the same object in the memory with the ID of 1 2 3 4 5, or it's going to mutate it. It's going to change it basically to have 4 items now. अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपने reassign करना है. Let's do an experiment here. Again, to begin with, you have the same list called 1 2 3 with the ID 1 2 3 4 5. When you reassign, meaning L equals to 5 6, then what's going to happen is it's going to create a new object. It's going to point L to that object. जो पिछले वाला object है, that is in the memory and it's marked for deletion and it's going to be removed from the memory in a while. Garbage collector is going to do that. और आप देख रहे हैं कि इसकी ID जो है that is different. पिछली जो ट्रिकी एग्जांपल नंबर 3 थी उसमें ये हुआ था कि शुरू में जो हमने किया था ना for E in L, तो L was kind of here, और जब E को हमने चेंज किया था टू द डबल ऑफ, जब L को हमने चेंज किया था टू द डबल ऑफ L इक्वल्स टू L प्लस 1, तो L आपका हट के डबल की तरफ पॉइंट कर गया था, लेकिन E जो है वो पुराने ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर रहा था. सो दैट्स हाउ इट वाज नॉट गोइंग इन इनफिनिट लूप. So that's the difference between mutation, it's the same object, versus reassignment, it's a completely different object. Now what I want you guys to do is to open up your console and try to do the following in order. First left column from top to bottom and then right column top to bottom and see किस में से आपके पास जब आप नई लिस्ट बनाते हैं तो उसका क्या बिहेवियर है, जब आप अपेंड करते हैं फॉर एग्जांपल या एनी म्यूटेशन फंक्शन तो उसका क्या बिहेवियर होता है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सेम रहता है कि डिफरेंट हो जाता है. दिस आईडी इज गोइंग टू बी क्रूशियल इन ऑर्डर फॉर यू टू डिटरमिन दैट. So do it and see you guys in the next video. Before we do that, we have the summary. We saw tuples in this video, which are immutable sequences. They cannot change. Lists are mutable, they can change. There are methods on which you can apply on lists. There are methods that can change the list. There are methods that create new lists but do not change the list. And then we saw split and join, basically, that converts between list and strings and vice versa. Functions can have side effect. Side effect का मतलब है कि it changes the list in the parameters. If you have any questions, shoot them away on Discord and we'll be happy to help you out. So see you next time. Bye bye.